In this video lecture, I would like to explain to you the typical accounting items which are a part of financial statements of a banking company. Let's proceed with bills payable. Usually, we call bills payable as the document which shows the amount owed due to the purchase of certain goods or services on credit. But in case of banking company, the meaning of bills payable is different. Here, when a customer wants to remit money to other places, he pays the amount to the bank, and in return, bank gives to the customer bank draft, banker check, traveler check और टेलीग्राफिक ऑर्डर. इसका मतलब यह है कि जब किसी बंदे को अपना पैसा किसी और जगह पे भेजना है, तो वो सिंपली वो पैसा बैंक को देता है और बैंक इन रिटर्न कस्टमर को देती है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंकर चेक, ट्रैवलर चेक और टेलीग्राफिक ऑर्डर एज पर द केस. After that, this bank draft is drawn on some other bank in which the customer gets the amount by encashing it. जो भी इंस्ट्रूमेंट कस्टमर को मिलता है वो किसी और बैंक के ऊपर ड्रॉन किया हुआ होता है और उसी बैंक में से वो दूसरे बैंक में से कस्टमर को वो बैंक ड्राफ्ट दिखाने के बाद पैसे मिलते हैं. द बैंक हु ऑनर्स द बैंक ड्राफ्ट गेट्स द अमाउंट फ्रॉम द बैंक हु इश्यूज द बैंक ड्राफ्ट. अगर मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने जाना है और आपने अपना पैसा बैंक के पास रख दिया और बैंक ने आपको इन अगेंस्ट दैट ट्रैवलर्स चेक इशू कर दिया. अब ये ट्रैवलर्स चेक आपको जिस जगह पे जाना है वहाँ पे किसी बैंक के नाम पे होगा. उस जगह पे जाने के बाद अगर आपने वो ट्रैवलर चेक उस बैंक में डिपॉजिट कर दिया जिसके नाम पे वो एक्चुअल में ड्रॉ हुआ है, तो उस बैंक से आपको पैसा मिलेगा. इसका मतलब जो भी बैंक आपका बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट करके आपको पैसे देगा, वो बैंक वही पैसा उस बैंक से रिकवर करेगा जिस बैंक ने आपको बैंक ड्राफ्ट इशू किया है. Bank draft or telegraphic order is the bank's bills payable, as the issuing bank has to pay this amount to the other bank when the customer encashes bank draft. इसका मतलब यह है कि जब वो बंदा वो बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट दूसरे बैंक में इनकैश करवाएगा, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बैंक को देके पैसे लेगा, तो उसी टाइम पे जो पहला वाला बैंक है जिसने आपको बैंक ड्राफ्ट इशू किया था, उस बैंक को वो दूसरे बैंक को पैसा देना है, क्योंकि वो दूसरे बैंक को पैसा देना है क्योंकि उस दूसरे बैंक में उस कस्टमर ने उस बैंक ड्राफ्ट को इनकैश करवाया है, मतलब कैश में कन्वर्ट करके लिया है. While preparing the balance sheet, some of these drafts might not have been encashed by the customers, and these uncashed bank drafts will remain on the liability side of the balance sheet as a bills payable. And bank charges certain interest on the bank draft, which is the income of the bank. तो क्या होता है अगर मान लो, मैं फिर से रिपीट करके आपको बताता हूँ. चलो मान लो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने जाना है, तो आपने बैंक में पैसे आपके डिपॉजिट किए. इन रिटर्न टू दैट बैंक ने आपको ट्रैवलर्स चेक इशू किया. फिर वो ट्रैवलर्स चेक आप लेके जिस जगह पे भी आपको घूमने जाना है वहाँ पे आप गए. उसी उसी इलाके के कोई कोई बैंक के नाम के ऊपर वही ट्रैवलर्स चेक उस पहले वाले बैंक ने इशू करके दिया है. अब उस दूसरे बैंक ब्रांच में आप जब जाओगे वो ट्रैवलर्स चेक आप दिखाओगे, तो आपको वो दूसरा बैंक पैसे देगा. अब जिस बैंक ने वो ट्रैवलर्स चेक इशू किया है उस बैंक को, वो जिस बैंक से आपने पैसे निकाले हैं उस बैंक को पैसा भेजना पड़ेगा. तो यहाँ पे ट्रैवलर चेक जो है वो जो पहला वाला बैंक है जिसने वो इशू किया है उसके लिए वो बिल्स पेबल है. सेम केस इज विथ बैंक ड्राफ्ट एंड बैंकर चेक. And at the end of the year, while preparing the balance sheet, if it is found that some of the checks or banker checks or bank draft are not encashed by the customers, and these uncashed bank draft will remain on the liability side of the balance sheet as a bills payable. क्योंकि अभी तक उस ड्राफ्ट को बैंक कस्टमर से इनकैश नहीं करवाया है दूसरे बैंक में, इसके कारण से उसे बिल्स पेबल कहा जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी. एंड व्हेन and bank charges certain interest on the bank draft, which is the income of the bank. For providing this facility, bank charges certain interest and it is bank's income. Now this is the first point, bills payable. Now let's discuss the important accounting item, that is branch adjustment account or inter-office adjustment. A bank having several branches will receive periodical statements from them regarding their the inter-branch transaction. जो बैंक कोई भी बैंक देख लो उसका बहुत सारा ब्रांचेस है, लेकिन बहुत सारा ब्रांचेस है, कोई भी बैंक आप देख लो और उस ब्रांचेस से वो बैंक पीरियडिकल स्टेटमेंट्स उसको मिलते रहते हैं ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस.
and it is possible that some entries may remain unadjusted in the head office of the bank at the close of the financial year, and such entries are recorded in the balance sheet under the subheading branch adjustment. क्या होता है, at the time of recording transaction, if head office finds that certain transactions are remained unrecorded due to not receipt of adequate information from the branch, in such a situation, sir, this type of transactions along with other transactions are recorded in the branch adjustment account, and this account is closed at the end of the year. And if it is closed with a debit balance, then it appears in the balance sheet at asset side under the head other liabilities. If it gets closes with a credit balance, then it appears on the liability side in the balance sheet under schedule other liabilities and provisions. So this is branch adjustment account. I'll repeat it again. Branch adjustment account means what? While preparing the balance, while preparing or while maintaining the books of accounts, some of the transactions are remain adjusted due to non receipt of adequate information from the branches, and these type of transactions are recorded in this account, that is branch adjustment account. And when this account is closed at the end of the year, if it closes with debit balance, then it appears on the asset side. If it closes with credit balance, then it appears on the liability side. Next head is other liabilities. This head includes liabilities such as pension fund, insurance fund, unclaimed dividend, unexpired discount, liabilities to the subsidiary company, branch adjustment account, employee security deposit account. Next is unexpired discount or rebate on bill discounted. This is quite important amount, important accounting item in the financial statement of a banking company. Now, this is also known as discount received in advance or discount received but not earned. Now, the question you should ask yourself is that why the unexpired discount or rebate on bill discounted is also known as discount received in advance or discount received but not earned. Okay, let me tell you what happens here. When a bank discounts a bill, when a bank discounts a bill, the bank credits the discount account with the full amount of discount received. Okay, here let me tell you, give you one case first. Suppose you are my, suppose there are two persons. Let's say I am the seller and you are my customer, and you have bought certain goods from me on a credit basis. And here in this case, for additional securities, I have drawn bill of exchange on you. I have drawn bill of exchange on you, and as per the bill of exchange, you will be making me payment after 3 months. Let's say the maturity date is 3 months. Now in this situation, but I need money immediately, and as per the bill of exchange, you will be making me payment only after the 3 months, but I need money immediately, so I can have the money against that bill of exchange from the bank. For that, I must go to the bank, and then after showing that bill of exchange to the bank will purchase it. So bank will purchase it, and at the time of purchasing this bill of exchange, it will discount it. Now let me give you this example. This Let me read this sentence one more time. When a bank discounts a bill, the bank credits the discount account with the full amount of discount received. Let's say the value of the bill of exchange is 10,000 rupees, and it is discounted at 6% on 29 February 2020, and the bill is due after 3 months. It means it will due on the end of May of 2020. Now, in this situation, bank passes one entry. This entry is passed in the books of bank account. That is, bill discounted and purchased account is debited with the full value of the bill. Why? Because bank is going to purchase that bill, and as per the real rule, debit what comes in as bank is going to purchase it. So the entry is passed like so. Therefore, bill discounted and purchased account is debited with rupee. It will be debited rupees 10,000, and as bank is going to discount it at the rate of 6%. So 6% of 10,000 is 600. That is for 12 months, and it is as the bill is due for 3 months only. The 3 months discount is rupees 150, and the entire 150 amount will be credited to discount received account as per nominal rule. Nominal rule says credits your incomes and gain. That's why discount received will be credited with the full amount of discount, and the customer's account will be credited with rupees 9,850. So being a seller, I am a seller. I have received, I have sold that bill to the bank, and bank has purchased it. And but at the time of making payment, bank has given me only 9,850 rupees. And now after 3 months,
you being a seller, you being a purchaser of the goods, you are supposed to pay that much amount. Means I mean to say the 10,000 rupees, not to me, directly to the bank, because right now the bank is in the position of the bill. That's why you are supposed to make a payment of rupees 10,000 to the bank. So bank is going to give me today 9,850, and after 3 months, bank is going to get rupees 10,000 from you, you as a customer. So here, let me tell you the most important thing. See here, the bill matures after 3 months. Therefore, 1 month discount, that is from 29 February 2020 to 31st March 2020, is the income of the current financial year, and remaining 2 months income, that is interest of April and May, is the discount received in advance. See, so out of 150 rupees, therefore the out of 150 rupees, rupees 50 is the 1 month discount related to this financial year, and remaining 100 is the rebate on bill discounted, or discount received in advance, or discount received but not earned. Why now you must have understood why this such a discount is called as discount received in advance, because it is of next financial year and it is received in the current year. And why is it called as discount received in advance or discount received but not earned? Because it cannot be treated as income of the current financial year, it is the income of the next financial year. So in this situation, if you get an adjustment in the problem like this, that there is a certain amount of rebate and bill discounted, if it is provided in the adjustment, in this situation we have to provide two effects of it. The first, in the profit loss account, it will be deducted from interest and discount received account. Now you will be asking yourself, that what is the need of deducting this interest and discount received account? Because when the entry is passed, the bank credits the discount account with the full amount of discount received. Means the discount account is credited with 150 rupees, whereas as far as current year income is concerned, it should be credited with 50 rupees. As it is the practice of a bank to credit the discount received account with the full amount, we have to pass here a reverse entry, and in that reverse entry we should debit discount received account, and we should credit rebate on bill discounted account. So therefore, in the profit loss account, it will be deducted from interest and discount received account, and it will appear in the balance sheet under the head other liabilities. Now, point number one: if rebate on bill discounted appears in the trial balance, it means what? Already the deduction effect is provided. Means already the reverse entry is passed. In this situation, it will have only one transferring effect, then it will appear in the balance sheet under the head other liabilities. And in the third situation, if an opening balance is given in the trial balance of rebate on bill discounted, I mean to say, if in a trial balance rebate on bill discounted appears as opening balance, then in this situation, rebate on bill discounted is to be only added to interest and discount account, that is in the profit loss account. Now, next concept is money at call and short notice. It is also interesting concept. These are interbank loans actually. When the loan is given by one bank to other bank for a certain period, if it is given for a long period, then obviously it will be recognized as a term loan. But if the loan is given only for one day by one bank to other bank, then in this situation it is known as a money at call. But if the loan is given on the condition that if it is to be called back, at least 3 days notice is required, then it is money at short notice. So what is money at call? If the loan is given by one bank to other bank only for one day, then it is money at call. And then what is money at short notice? If loan is given by one bank to other bank on a condition that when it is to be called back, at least 3 days notice is required, then it is called as money at short notice. Now, investments. See, a bank should give the details of state and central government securities, treasury bills issued by the Reserve Bank, and investment in shares, debentures of other companies. If the investment is quoted, its market value should be given in the inner column by way of information, and gold is shown under the head investments, but silver is shown under the head other assets in the balance sheet. Okay, now this is important: loans, cash credit, and overdrafts. Let me tell you, loans, cash credit, overdrafts what you call the amounts of loans which are offered to the client by the bank. और क्या या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से उसके क्लाइंट को दी जाती है, वो क्रेडिट फैसिलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक तो क्रेडिट फैसिलिटी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन मिलती है, या फिर सीसी के
सीसी एज अ सीसी मिलती है या फिर एज ओवरड्राफ्ट मिलती है। मतलब ये सारे के सारे लोन्स ही है, इन शॉर्ट ये लोन्स ही है बैंक के, जिसे बैंकिंग टर्म में खास नाम है, दैट इज एडवांसेस। All these are known as the advances of the bank. And I just told you one more advances of the bank, that is bill purchase and discounted. It is also a kind of advance of the bank, advance of the bank. Uh, Look here, let's discuss in detail first what is loans. See, all these three are the amounts given by the bank to its clients. Now, specifically, as far as loans are concerned, loans are generally granted for a long period. See, the tenure for the loan is, these are usually granted for a long period, and the client has to withdraw the amount of loan at lump sum immediately. At lump sum immediately. The interest is charged on the entire amount of the loan, whether he uses the full amount of the loan or not. The loan may be secured or unsecured. The rate of interest of a loan is generally less than the rate of interest on cash credit account, as the bank need not to keep the amount of loan ideal. Okay, let me elaborate this point to you one more time. See what happens in loan, loans are generally granted for a long period, and when the loan amount is sanctioned to the client is supposed to withdraw the amount at a lump sum immediately from the loan account. Let's say there is a customer known as Mr. X, and let's say I am a bank, and I have decided to offer a loan of rupees 10 lakh rupees to my customer, but I am not going to keep that entire amount in his loan account. I am going to deposit amount in lump sum in his loan account, and he is supposed to withdraw that amount from his loan account in lump sum and immediately. But here, let me tell you, the most important part is that here I am going to charge the interest on the entire amount of the loan, though I am not going to deposit the entire amount of loan in his loan account at once. I am going to deposit, means I am going to credit his loan account, um, what I call, in lump sum only. Still I am going to charge the entire charge I am going to charge the interest on the entire amount the loan. चलो मान लो कि एक कस्टमर है, एक मतलब मेरा कस्टमर है, एक मैं बैंक हूँ, और मुझे उसे 10 लाख का लोन देना है, तो मैं 10 लाख का 10 लाख उसके अकाउंट में नहीं डालूंगा। मैंने आज 5 लाख डाला, एक महीने के बाद 3 लाख डाला, तीसरे महीने में 2 लाख डाला। तो जैसे जैसे मैं पैसे उसके अकाउंट में डालूंगा, उसे वैसे वैसे वो पैसे विड्रॉ करने हैं। अगर उसने नहीं भी किए, अगर किए भी, तो भी मैंने जो 10 लाख का मैं उसे देने वाला हूँ लोन, मैं पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट लगाऊंगा। मैं 5 लाख के ऊपर, फिर 3 लाख के ऊपर, फिर 2 लाख के ऊपर ऐसे नहीं लगाऊंगा। मैं पूरे के पूरे 10 लाख पे ही इंटरेस्ट लगाऊंगा। और जो भी मैं लोन उसे ऑफर करने वाला हूँ, इट मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? If I have mortgaged certain asset of him, then it such a loan will be treated as a secured loan. If I am not going to mortgage any of his asset, then in such a case, whatever loan I am going to give him will be treated as a unsecured loan. Now here the rate of interest on a loan is generally less. Why the rate of interest is generally less? Because I am not going to keep the entire amount as ideal in his account. मतलब मैं पूरा का पूरा 10 लाख उसके अकाउंट में एक ही बार नहीं डालने वाला हूँ, इसलिए rate of interest is less as compared to cash credit account. Now let's discuss the concept of a cash credit, or the loan type, advanced type of a cash credit. इन कैश क्रेडिट द बैंक एग्रीज टू लेंड अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। मतलब क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से, उसके क्रेडिट कैपेसिटी के हिसाब से द सीसी अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, एंड द क्लाइंट मे और मे नॉट टेक द एंटायर अमाउंट ऑफ द कैश क्रेडिट, बट द बैंक हैज टू कीप दैट मच अमाउंट liquid, as the client may withdraw the amount at any time when the CC is sanctioned to him. Now this is important, let me tell you. Suppose your X is my customer, I am a bank, and I have let's say decided a limit of rupees 10 lakhs as a CC to him. As I have decided to give him a CC of rupees 10 lakh, I should keep that much amount liquid in his account, whether he is going to withdraw it or not. But I have to keep that much amount liquid in his CC account. Unlike loan system, in loan system there is no compulsion on me to keep the entire amount as ideal in his account. But in CC case, I must keep whatever the limit decided by me for him in his loan account. And here that's why the rate of interest is generally high, as the bank is required to keep the amount of cash credit ideal. Unlike loan, in case of loan, the interest rate is less, as there was no compulsion on being a bank on me to keep the entire amount of cash credit ideal. Generally,
the interest is charged on the amount withdrawn by the client. But sometimes to protect itself, the bank put a clause in the agreement that interest on one third cash credit amount will be charged whether withdrawn or not. And cash credit is given for a long period. Now let me tell you, cash credit is given for a long period is the similarity between the loan and CC. But unlike CC, here unlike loan, here the rate of interest is high. And let me tell you, unlike loan where interest will be charged on the entire amount of the loan, whether actually withdrawn by the client or not, but here the interest is usually charged on the amount which is actually withdrawn by the client. But sometimes what happened, as the as it is compulsory for a bank to keep the entire amount of CC liquid in his CC account, and if the client has not withdrawn anything from that CC account, then because of this situation there will be no income in the form of interest from such a client to the bank. So in order to protect itself, sometimes bank puts a clause in the CC agreement that one third interest will be charged on the one third of cash credit whether actually withdrawn by the client or not. So this is all about CC. Now let me tell you the concept of overdraft. Let me explain to you the concept of overdraft. Now you know the overdraft facility is short-term facility and it is granted only to current account holders. Okay, I'll read all the points one by one. Here, overdraft is a short-term arrangement by which the bank allows its clients to draw more money than the bank balance the client has in the bank. Let's say X is my client and he is current account holder, and right now he is having a balance in his current account, let's say rupees 5,000, and I have granted him a overdraft facility up to rupees 3,000. So he can withdraw, though he is having 5,000 in his current account, but he can withdraw a sum of rupees 8,000. So that excess amount which he has drawn over the actual bank balance is known as bank overdraft. Therefore the bank overdraft is the excess amount used over the actual bank balance, and that amount of rupees 3,000 he must clear off within a period specified. If I have let's say the period given by me to him, let's say is 1 month. So within a period of 1 month he should deposit a sum of rupees 3,000 in CCR in his current account. If he fails in that situation, rate of interest is higher as compared to the rate of interest on the loan, as the bank has to keep that much amount idle once the overdraft amount is sanctioned. I mean to say, if he fails to if he fails to deposit that amount, overdraft amount, within a stipulated period of time, then in situation he will be charged with a higher rate of interest. Why? Because at any situation, being a bank, I have to keep that much amount of overdraft in his current account idle, where he is going to use it or not. And the interest is charged on the actual amount of used of the overdraft, that you know. Okay, now let's discuss the interest on doubtful debts. But before discussing it, I would like to discuss with you acceptances, endorsements, and other obligations. Okay, what is accepted by bank? What is endorsed by bank? And what are the other obligations by bank? Okay, now listen to me carefully. The seller, while selling the goods to the buyer, may insist on some person as a surety or a guarantor, as the seller may not only depend on the buyer's personal credit. इसका मतलब यह है कि जब कोई सेलर उसके कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है, तो सेलर कभी कभी उस कस्टमर को बोलता है कि मुझे खाली तुम्हारे पर्सनल क्रेडिट के ऊपर मुझे तुम्हें गुड्स सेल नहीं करने हैं, तुम मुझे कोई गारंटी दो या फिर कोई गारंटर लाके मुझे दे दो, आप एक कोई तो भी श्योरिटी दो या फिर गारंटर लाके दे, मतलब कोई भी गारंटर होना चाहिए तुम्हारे और मेरे ट्रांजेक्शन के बीच में, तब मैं तुम्हें गुड्स क्रेडिट के ऊपर सेल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हो सकता है। नाउ इन दिस सिचुएशन, the buyer may give a particular person's name as a surety or make an arrangements with his bank so that the bank can accommodate him in any one of the following three ways. Now in this situation, bank can help the buyer to buy the goods on credit from the seller. But how? See, by accepting a bill on behalf of the buyer drawn by the seller. See here, the seller will draw a bill on the buyer and his bill will be accepted by the bank. If in future, if the buyer fails to make a payment as the bill is accepted by the bank will be making payment to the seller. So by this situation, by this condition, by accepting the bill, bank can accommodate the buyer. Now next is by endorsing a promissory note drawn on the buyer and payable to the seller. Suppose if the buyer prepares a promissory note which is payable to the seller,
Now, by endorsing a promissory note, bank can bank can accommodate the buyer. If buyer fails to make the payment as the promissory note is endorsed by the seller, it becomes bank's promise, and as it becomes bank's promise to make the payment to the seller, and the bank has to pay that amount to the seller. Now, number three is giving a guarantee to make a payment if the buyer fails to pay the amount. This is the third way. Here, bank will give the guarantee to the seller, and it will assure the seller that we will make you a payment if the buyer fails to pay the amount. So, in all these above cases, the bank takes the responsibility of paying the amount if the buyer does not pay the amount. Therefore, it is a bank's liability. But as the bank is a surety or guarantor, after paying the amount to the seller, it can recover the amount from the buyer. Generally, a bank prepares a register for such acceptances endorsements, and at the year end, if these acceptances are not honored by the buyer, then bank passes the following entry to record these acceptances endorsements in its books of accounts. So it passes an entry like this: constituents liability for acceptances, endorsements, and other obligation account debit to acceptances, endorsements, and other obligation account. In almost all cases, when a bank gives such a guarantee, actually before giving such a guarantee, I mean to say before accepting bills drawn by the seller on the buyer, or before endorsing a promissory note drawn by the buyer payable to the seller, or before giving any such a guarantee, bank protects itself by taking some of security or asset from the buyer before accepting such a guarantee. मतलब मतलब accept before accepting bill of exchange, और before endorsing promissory note, बैंक क्या करती है? जो भी बायर है उसकी कोई भी असेट, जो भी असेट उसने ऑफर किया है एज अ मॉर्गेज, उसे उसे एक्सेप्ट करती है एज अ सिक्योरिटी, और उसके बाद ही गारंटी देती है। उसके पहले गारंटी कभी बैंक नहीं देती। जनरली सच acceptances and endorsements are made to facilitate foreign trade, and these items appears under the head contingent liabilities. This head item appears under the head contingent liabilities. Now it is known as contingent liabilities because a bank has to make a payment to the seller if buyer fails to pay it. If buyer pays that amount on due date to the seller, in this situation the bank has no need to pay that amount, so it is treated as a contingent liability. So it is going to become a liability of a bank, a real liability of a bank, if the buyer fails to pay the amount to the seller. Otherwise, it is treated as a contingent liabilities. Now let's discuss the next point. It is quite important. Bills for collection being bills receivable. Now see, here bills for collection. It means what? Bank accepts bills for collection. What is bills for collection? Bills for collection means what? Bank accepts bills for collection, and these are usually bills receivables. It means bank accepts bills receivables to collect. Huh? Now let me tell you, when the buyer and seller stay at different places and they are unknown to each other. See, when the buyer and seller stay at different places and they are unknown to each other, still they can purchase and sell goods with the help of the bank. Still, they can purchase and sell the goods with the help of the bank. How? Let me tell you. See, the seller will send the goods to the buyer's place through railway, lorry, or ship. But the documents of these goods, that is railway receipts or lorry receipt or bill of loading, is sent to the buyer's bank. Now, this is important. See, let me tell you one more time. Two persons who wants to trade with each other and they live at a different places, still they can buy and sell the goods with the help of the bank. How? Simply the seller has to send the goods to the buyer place through a railway, through lorry or ship, or whatever is the mode of transportation. But the important documents, I mean to say transport related documents, are sent to the buyer's bank. So a bank where buyer is having account, to buyer's bank all these documents are sent. The seller also sends a bill or hundi drawn on the buyer to the buyer's bank. At the same time, the seller, along with those transport related documents, he also sends the bill or hundi drawn on the buyer to the buyer's bank. When the buyer's bank gets all these documents, it will ask the buyer to honor the bill or hundi. Now, after getting all these documents,
तो बायर बैंक क्या करती है, फिर बायर को बुलाती है और उसको बोलती है कि बेटा तुमने ये सारे बिल्स ऑनर करो, जो भी इस बिल की जो भी अमाउंट है वो बैंक में अभी डिपॉजिट करो। ऑन डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ द बिल or hundi in the bank, the buyer's bank hands over the documents, that is railway receipt or lorry receipt or bill of loading as per the case to the buyer. And then buyer by presenting these documents to the proper authority gets the delivery of the goods. यहाँ पे क्या होता है, जब वो डिपॉजिट करता है जो भी बिल का अमाउंट है बैंक में, मतलब बायर्स बैंक उसी के ब्रांच में जाता है जहाँ पे उसका बैंक अकाउंट है, वहाँ पे जाके वो बिल के अमाउंट दे देता है। एंड इन रिटर्न फॉर दैट उसे फिर क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिलता है। और वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाएगा, मतलब अगर वो शिप से आएगा तो शिप यार्ड में जाएगा, अगर किसी रेलवे से आएगा तो रेलवे स्टेशन पे जाएगा, अगर किसी लॉरी से आएगा तो लॉरी वाला जो भी ट्रांसपोर्ट वाला है उसके पास जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट दिखाएगा, एंड आफ्टर शोइंग दैट डॉक्यूमेंट ही विल बी गेटिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। Therefore, and after that, the seller's bank, after getting the amount from the buyer's bank, उसके बाद क्या होता है, जो बायर बैंक है, जो भी सेलर बैंक है मतलब जो ऐसा बैंक जहाँ पे सेलर का अकाउंट है, वहाँ पे वो सारे पैसे भेज देता है, मतलब बायर बैंक सेलर बैंक के पास वो पैसे भेज देता है। एंड फॉर रेंडरिंग दिस सर्विस दैट इज कलेक्टिंग द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, द बैंक चार्जेस सर्टेन कमीशन। और बैंक तो फुकट में ऐसा कुछ सर्विस नहीं देने वाली है, जब भी वो ऐसा सर्विस दे रही है तो कुछ पैसे वो चार्ज करेगी। इसका मतलब बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या होता है, वो बिल्स कलेक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर फ्रॉम हिज बायर। Bank collects the bills or amount on behalf of the seller from the buyer. Now this is what bills for collection. For a certain and for the service it charges certain commission. Now this transaction, though the bank is advantageous to the buyer as well as the seller gets the amount without which the goods are not delivered to the buyer, and buyer gets the goods when he pays the amount to the bank. अभी इम्पोर्टेंट, ये जो सर्विस है ना सर, जो बैंक दे रही है सेलर और कस्टमर, सेलर और बायर को, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, जब बायर पैसे सबमिट डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर, उसे गुड्स की डिलीवरी मिलती है, और सेलर को जब पैसे मिल जाते हैं उसके बाद बायर को गुड्स की डिलीवरी मिलती है, यानी दोनों का भी इसमें फायदा है बराबर का। नाउ हियर bank maintains a bills for collection register and enters the necessary particulars of bills for collection. When the amount is collected uh, from the buyer, the following entry is passed in the books of account. अभी कौन सी एंट्री पास होती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, when the amount is collected from the buyer, कौन सी एंट्री पास, जब बैंक रिसीव करेगी पैसे, so cash being a real account, we have to consider here real rule, that is debit what comes in, as bank is going to collect the cash from the buyer, then its cash account will be debited. And after debiting the cash account, what is it going to do? It is going to charge certain commission. As good bank is going to charge a certain commission, being an income, we have to follow here nominal rule, and as per the nominal rule we have to credit the commission account. Therefore commission on bills for collection account is credited, and let's say the cash collected is, let's say 10,000 rupees, let's say the rate of commission is 6%, so therefore 6% of 10,000 is 600. So here you will see cash 10,000 debit to client 9,400 and commission 600. So client will be getting only rupees 9,400 on his sale. Now if at the end of the year certain bills are not collected, they are shown as bills for collection at the footnote of the balance sheet. So here we have to mention the bills for collection, whatever bills banks has accepted to collect from its buyer are recorded at the footnote of the balance sheet. It is not contingent liability. Let me tell you, bills for collection is not the contingent liability. Now let's discuss. Now I'll discuss with you first non-performing asset, and after discussing non-performing asset, I'll discuss with you other parts. Okay, let's discuss in detail. Non-performing asset. What is performing and what is non-performing? See, an asset account becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. See, जब कोई लोन बैंक देती है, अगर उस लोन पे अगर बैंक को इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है, आई मीन टू से अगर कोई लोन से बैंक को इनकम मिलना बंद हो जाता है, then such a loans are known as non-performing asset. Therefore, and we know all the loans in banking company are known as advances. I mean to say, short-term loan, long-term loan, overdraft, CC, then bill purchase and discounted. All these are banks advances.
and these banks advances are classified into categories: performing asset and non-performing asset. What is performing asset? Performing asset means what? ऐसे लोन्स जिसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इनकम मिल रहा है, और ऐसे लोन्स जिसके ऊपर बैंक को इनकम नहीं मिल रहा है, that is non-performing asset. Now assets which are not non-performing are performing asset. An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. मतलब बैंक का एडवांस नॉन परफॉर्मिंग कब होगा? जब उससे बैंक को इनकम मिलना बंद हो जाएगा. The term non-performing asset means a credit facility in respect of which the interest or installment remains past due for a period of 1 quarter, that is 3 months, that is 90 days. मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कौन सा एसेट है जिसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट भी नहीं मिला है और इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है. कितने दिन के लिए? पिछले 1 क्वार्टर के लिए, आई मीन टू से 3 मंथ्स के लिए, मतलब 90 दिन के लिए अगर नहीं मिला है, then it is non-performing asset. Moreover, if one of the account has become a non-performing asset, all the accounts of the borrower will be treated as a non-performing asset. चलो मान लो कि एक borrower है, मैं बैंक हूँ, मैं borrower, मेरा एक borrower है, उसके 3 मेरे पास लोन अकाउंट है, मतलब उसने 3 अलग अलग लोन मुझसे लिए हैं. अगर वो 3 लोन में से अगर एक का पेमेंट कर रहा है टाइमली, लेकिन बाकी 2 का नहीं कर रहा है पेमेंट टाइमली, अगर मान लो, चलो मान लो कि 2 का कर रहा है, 1 का नहीं कर रहा है, इन दिस सिचुएशन आल्सो ऑल हिज accounts, all the accounts of the borrower will be treated as a non-performing asset. Next is, however, credit facilities backed by government guarantee, though past due, should not be treated as a non-performing asset. मतलब अगर मैंने किसी बंदे को लोन दिया है और उसने पिछले 90 दिनों से या फिर 90 दिन से भी उसका ज़्यादा पीरियड हो चुका है और उसने मुझे अभी तक इंटरेस्ट भी नहीं दिया और इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, तो एज पर द कंसेप्ट आई शुड ट्रीट द सेम एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. बट अगर मुझे गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि अगर उस बंदे ने आपको पेमेंट नहीं किया तो हम करेंगे, हाँ, तो in this situation I can't treat the same as a non-performing asset. Now here assets of the bank are classified as a performing asset and non-performing asset for income recognition. Let me tell you, the purpose of classifying the advances into performing and non-performing is only for income recognition. Now you should ask yourself, what is income recognition? See, income recognition means when to recognize the income. For this concept, you should ask yourself when a bank should recognize the income on his advances. I am repeating again, when a bank should recognize income on his advances. Let's discuss in detail the income recognition part. See, banks have been advised by the RBI that they should not that they should identify non-performing assets, and banks should ensure that interest on such a non-performing asset is not to be treated as income in the profit loss account until and unless bank receives it actually. चलो मान लो किसी एक बंदे को मैंने लोन दिया है और पिछले 3 महीने हो गए, उसने अभी तक मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गया, उसने अभी तक मुझे इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया. So as per the concept, I will treat the same as non-performing asset. Now in this situation, as the person has not paid me payment of interest and installment, as I am not received the interest, can I treat the same as income of the bank as I have not received it? No, I can't treat it. क्योंकि एक लिमिट के आगे टाइम गया है और उसने अभी तक मुझे इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, तो इन दिस सिचुएशन मुझे श्योर करना पड़ेगा कि ऐसा जो भी इंटरेस्ट है जो कि एक्रू है ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आई शुड नॉट ट्रीट द सेम एज इनकम ऑफ द बैंक, क्योंकि वो अभी तक मुझे मिला ही नहीं है और वो मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी भी नहीं है. अगर मैंने उसे चलो मान लो कि मैंने उसे इनकम करके ट्रीट कर दिया, तो इससे क्या होगा, मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे उतना प्रॉफिट है क्या? नहीं है. अगर मैंने प्रॉफिट ज़्यादा बट दिखा है तो मुझे टैक्स भी ज़्यादा गिरेगा. इसका मतलब मैं टैक्स ऐसे इनकम पे ऊपर भरूंगा जिसका जो इनकम मुझे अभी तक हुआ ही नहीं है. So bank should ensure that interest on such a non-performing asset is not to be treated as income in the profit loss account until and unless bank receives its actually. मतलब बैंक उसको इनकम ट्रीट कर एज ए इनकम ट्रीट कर सकती है. कब कर सकती है? अगर उसको मिला, चलो मान लो कि 4 महीना मुझे इंटरेस्ट मिला ही नहीं, इंस्टॉलमेंट मिला ही नहीं, लेकिन 5वें महीने में मुझे पिछले 4 महीने का इंस्टॉलमेंट भी मिला है और इंटरेस्ट भी मिला है. नाउ इन दिस सिचुएशन आई कैन ट्रीट सच ए इंटरेस्ट एज अ इनकम ऑफ द बैंक. Now, any interest accrued and credited to income account must be cancelled by a reverse entry once the credit facility comes under the category of non-performing asset. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप लिसन टू मी नाउ केयरफुली. चलो मान लो कि मैंने 1 जनवरी को एक बंदे को लोन दिया है, उसने मुझे 1 फरवरी का एक महीना हो गया, उसने मुझे पेमेंट किया इंटरेस्ट का. अभी जो मुझे इंटरेस्ट मिला है मैं उसे ट्रीट करूंगा एज अ
इनकम ऑफ द बैंक। चलो दूसरा महीना हो गया, मतलब अभी फरवरी एंड हो गया, फरवरी एंड को मैं आया, अभी फरवरी एंड को उसने मुझे पेमेंट नहीं किया है, यानी मतलब क्या, मुझे पास ड्यू, मुझे कितने दिन तक इनकम नहीं मिला उसके इंटरेस्ट से, सॉरी मुझे इंटरेस्ट कितने महीने का नहीं मिला, एक महीने का नहीं मिला। सेम केस हो गया फिर अब नेक्स्ट महीना मार्च में, मार्च एंड तक आया मैं, 2 महीने हुए मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, अभी तीसरा महीना हो गया अप्रैल एंड, अभी अप्रैल एंड में भी मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं मिला। अभी जैसे ही मैं अप्रैल को क्रॉस करता हूँ, माय परफॉर्मिंग एसेट इज गोइंग टू बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। As your performing asset is going to become non-performing asset, whatever interest you credited for the month of February, March and April, you should reverse that interest by passing reverse entry. Means whatever interest we have credited to income account of the month of February, March and April, we should cancel it by passing reverse entry, because our credit facility has now come under the category of non-performing asset. Non-performing asset. Now it has been advised by RBI that the banks are to recognize their income on accrual basis in respect of income on performing asset, and on cash basis in respect of income on non-performing asset. That is important. I'll repeat the same example one more time for you. 1 जनवरी को मैंने लोन दिया था, उसने जनवरी एंड पे मुझे उस जनवरी मंथ का इंटरेस्ट दिया है। अभी फरवरी स्टार्ट होने वाला है, फरवरी का एंड आ गया, मैंने यानी दूसरा महीना हो गया, लेकिन वो दूसरे महीने को उसने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया है, लेकिन मुझे उस इंटरेस्ट को, दो आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, आई हैव टू ट्रीट द सेम एज इनकम ऑफ द बैंक, बिकॉज स्टिल माई लोन इज इन द कैटेगरी ऑफ परफॉर्मिंग एसेट। मतलब मुझे एक्चुअल बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या, ड्यू और कैश विच एवर इज अर्लियर, तो इंटरेस्ट अभी ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन ड्यू अर्लियर है, इसलिए मुझे उसको इनकम करके ट्रीट करना है। फिर आ गया मार्च का एंड, मार्च में महीने का एंड, अभी इस महीने में भी उसने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन 2 महीने हुआ उसने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया, स्टिल इट इज परफॉर्मिंग एसेट, बिकॉज वी नो द टाइम लिमिट इज 3 मंथ। नाउ मार्च हो गया, अभी अप्रैल का भी एंड आ गया, अभी 3 महीने हो गए, उसने अभी तक मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया, स्टिल इट इज परफॉर्मिंग एसेट, स्टिल इट इज परफॉर्मिंग एसेट, लेकिन जैसे ही मैं अगले महीने में जाता हूँ वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। नाउ इन दिस सिचुएशन वट एवर इंटरेस्ट आई हैव क्रेडिटेड ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मुझे वो रिवर्स करना पड़ेगा, मुझे वो रिवर्स करना पड़ेगा। और या फिर मान लो वो चौथे महीने में, यानी चौथे महीने में मैं 3 महीने होने के बाद जो चौथा महीना है उसमें उसने मुझे पूरा इंटरेस्ट दे दिया पिछले 3 महीने का भी। नाउ इन दिस सिचुएशन देयर इज नो नीड टू पास द रिवर्स एंट्री, स्टिल नाउ आवर एसेट स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ परफॉर्मिंग एसेट। सो दिस इज द परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो क्या करना है, समझ में आया आपको, हमें रिवर्स एंट्री पास करनी है, मतलब 3 महीने तक वेट करना है, वो परफॉर्मिंग है तब तक, 3 महीने के जैसे 3 महीने हो जाए, जो भी इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है पिछले 3 महीने में एज ए इनकम करके, जो एक्चुअल में मिला नहीं, उसे रिवर्स करना है, मतलब उल्टा एंट्री करना है उसका, मतलब जो इंटरेस्ट अकाउंट को आज तक हम क्रेडिट कर रहे थे, अभी हमें उसे डेबिट करना है वो 3 मंथ्स के लिए। और उसके आगे जब तक उसका एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैश में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो भी इंटरेस्ट है उसको हम इनकम करके ट्रीट नहीं करेंगे इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ लेट डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस। Now bank advances are classified in four types, in four categories, in four groups. Standard asset, these assets do not disclose any problem and also do not carry more than normal risk attached to the business. These are performing asset. In short, जो भी आपकी performing asset है, जिसके ऊपर आपको रेगुलरली इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक को रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा है, वैसे एसेट्स को बैंक क्या बोलती है, स्टैंडर्ड एसेट बोलती है। नाउ सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, सच एसेट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year with effect from 31st March 2007. The earlier period of 18 months has been reduced to 12 months. पहले सब स्टैंडर्ड एसेट के लिए कैटेगरी लिमिट था 18 मंथ्स का, अभी वो 12 मंथ्स का है। मान लो अगर कोई लोन अकाउंट है कि जिससे जिससे हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है, और जो जिस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिला है वो पीरियड छोटा है, मतलब लेस है एज कम्पेयर टू 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ से कम पीरियड है। Now in this situation such a loan will be treated as a substandard asset, और ये एनपीए है, एनपीए का फर्स्ट टाइप है। नाउ सेकेंड इज डाउटफुल एसेट, इट इज एन एसेट विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर 1 year, मतलब कोई एसेट जिसका टेन्योर है 12 मंथ्स या फिर 12 मंथ से ज्यादा, दैट इज व्हाट, डाउटफुल एसेट। In term loans, if the installment of the principal has remained overdue for 1 year, should be treated as a doubtful, मतलब 1 साल का है पीरियड, 1 साल के लिए वो एनपीए है,
then it will be treated as a doubtful asset. Such an NPA will be treated as a doubtful asset. Now loss asset. Now it is important. A loss asset is one where the loss has been identified by the bank or internal auditors or the RBI inspection, but the amount has not been written off wholly or partially. Such an asset is not realizable, although there may be some salvage or recovery value. अभी important है, अगर केस ऐसा कोई लोन है जहाँ पे बैंक को खुद ने आइडेंटिफाई किया है कि वो जाके आगे जाके उसको उस लोन से पैसे नहीं मिलने वाले, या फिर जो इंटरनल ऑडिटर है बैंक का उस वो बोल रहा है कि आगे जाके आपको इस लोन से पैसे नहीं मिलने वाले, अगर आरबीआई का इंस्पेक्शन कहता है कि आगे जाके आपको एक लोन है वहां से पैसे नहीं मिलने वाले और ये आइडेंटिफाई हो चुका है, यू ऑल आर एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, or any one of you agreed on this point, मतलब any one of you identified that so from certain asset we are not going to realize anything though we have few security of such asset. Now in this situation such a NPA will be treated as a non as a loss asset, Now let's discuss the provisions of bad debts. Let me tell you the what is bad debts in case of banking company first. See, जब हम goods purchase करते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो जिससे हम परचेस करते हैं गुड्स उसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं और वो हमें डेटर्स बुलाता है। अगर हमने आगे जाके उसे पैसे नहीं दिए तो वो बोलता है कि मेरा डेटर्स जो गुड था वो बैड हो गया, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम माय डेटर्स एंड अप टू अ सर्टेन अमाउंट एंड दैट सर्टेन अमाउंट ही ट्रीट्स एज अ बैड डेट्स इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंक तो कुछ सेल भी करती नहीं क्रेडिट के ऊपर, लेकिन बैंक क्या देती है लोगों को, बैंक लोगों को लोन देती है। अगर जिस किसी को भी बैंक ने लोन दिया है, अगर वो बंदा आगे जाके बैंक को पैसे नहीं रिटर्न करता, तो जितना पैसा उसने बैंक को रिटर्न नहीं किया उसको बैंक बोलती है बैड डेट्स, कि हमें हमारे लोन्स मिले नहीं है, दैट इज व्हाट बैंक्स बैड डेट्स। Now, the bank should make provision against substandard asset, doubtful asset, loss asset on the I have mentioned their basis, and that too we have to provide after taking into account the time lag between an account becoming doubtful of recovery, its recognition as such, realization of the security, and the erosion over time in the value of security charged to the banks. Now this is important, मतलब कितना बैड डेट के लिए प्रोविजन करना है on NPA, it depends on its type, that is recovery period, recognition, and the realization value of security. Now in case of loss asset, the entire asset should be written off. अगर किस कोई लोन को बैंक ने ट्रीट किया है एज अ लॉस एसेट करके, तो जितने भी अमाउंट का वो लोन था, वो उतने पूरे के पूरे अमाउंट का हमें क्या करना है, उस उतने पूरे के पूरे अमाउंट का हमें प्रोविजन करना है फॉर बैड डेट। इफ द असेट्स आर टू मेंटेन इन द बुक्स फॉर एनी रीजन, देन 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब अगर हमें बुक्स में रखना भी है उस असेट का वैल्यू, तभी भी उसका साइड इफेक्ट जो है, क्रॉस इफेक्ट जो है प्रोविजन का, अप टू दैट अमाउंट ओनली, मतलब पूरा का पूरा 100%। अगर 5,000 रुपये का लॉस असेट है तो 5,000 का आपको प्रोविजन करना है इन द बुक्स ऑफ, सॉरी प्रोविजन करना है एज अ बैड डेट्स करके। Now doubtful debts. Now this is important. In case of a doubtful debts, 100% of the extent to which the advance is not recovered by the realizable value of the security in the possession of the bank, and the realizable value is estimated on a realistic basis. मतलब कोई डाउटफुल असेट है, उसने हमारे पास एक सिक्योरिटी रखा है, अगर उस सिक्योरिटी को सेल करने के बाद भी जो भी अमाउंट बचता है, मान लो कि 10 लाख रुपए का एक लोन दिया था हम लोगों ने, उसने हमें एक सिक्योरिटी दिया 9 लाख रुपीज़ का ना, उसका एक सिक्योरिटी का आज का वैल्यू 9 लाख रुपीज़ है, और वो डाउटफुल असेट हो गया। आपको अभी तो आपको मालूम है डाउटफुल असेट मतलब पीरियड कितना होता है, 1 साल का। अब वो डाउटफुल असेट हो गया, अभी जो असेट बेचेंगे हम 9 लाख का, वो बेचने के बाद भी 1 लाख रुपया बचता है, तो जो 1 लाख रुपया है ना, उसका 100% प्रोविजन करना है हमें। हाँ, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, सेकंड पॉइंट भी इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पीरियड भी कंसिडर करना है। 100% कब करना है वो पीरियड भी देखना है ना। ओवर एंड अबव आइटम ए, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड फॉर विच असेट्स रिमेन डाउटफुल, 25% to 100% ऑफ द सिक्योर्ड पोर्शन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। मतलब अगर 1 साल के लिए है तो सिक्योरिटी को माइनस करके भी जो अमाउंट बचता है उसका 25% हमें प्रोवाइड करना है। अगर जो डाउटफुल असेट है इन बिटवीन 1 to 3 ईयर्स, तो सिक्योरिटी का बैलेंस लोन अमाउंट से माइनस करके, मैं सिक्योरिटी मॉर्गेज का वैल्यू लोन अकाउंट से माइनस करके जो भी बचता है उसका 40% हमें देना है। अगर डाउटफुल असेट है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 ईयर्स, तो इन दिस सिचुएशन जो भी लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट से सिक्योरिटी को हम माइनस करेंगे, मतलब मॉर्गेज जो भी रखा था बैंक के पास
उसको बेच के कितना पैसा होगा, वो पैसा अगर हम माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचता है एडवांस का आउटस्टैंडिंग, उसके ऊपर हमें 100% प्रोवाइड करना है एज अ बैड डेट्स. Now, substandard asset, this is important. A general provision of 15% on total outstanding is required to be made without making any allowance for DRCGC and ECGC guarantee, cover, and securities available. The unsecured exposures which are identified as a substandard would attract the additional provision of 10%, that is 25% on the outstanding balance. अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो ध्यान में रखो आपको 15% प्रोवाइड करना है. अगर उसमें कोई अनसिक्योर्ड पार्ट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको और 10% एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है. तो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू प्रोवाइड 25% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. Now, next is standard asset. Now, you know standard asset means what? Performing asset on which bank is regularly receiving interest. A general provision of a minimum of 0.40% of the total standard asset should be made. मतलब यहाँ पे चलो मान लो कि आपका एक परफॉर्मिंग असेट है, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपए, या फिर 1 लाख रुपए उसका वैल्यू, तो 1 लाख रुपए का 40% 0.40 कितना होगा? 400 रुपये. यानी आपको 1 लाख के लोन के अगेंस्ट बैड डेट का प्रोविजन करना है 400 रुपये का. अगर आपका असेट एक परफॉर्मिंग असेट है, आई मीन टू से स्टैंडर्ड असेट है, तो ना नाउ लेट्स डिस्कस द अदर पॉइंट्स. Okay, accounting here now. Every banking company should prepare a balance sheet and profit loss account as on 31st March of each year in the form set out in the third schedule under section 29 of the Banking Regulation Act 1949. तो हर एक कंपनी को, हर एक बैंकिंग कंपनी को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज बनाना है एज ऑन 31st March each year. Now, next is provisions for bad and doubtful debts. See, the amount of bad debts and provision for bad debt is to be charged under the heading provisions and contingencies in the profit loss account. मतलब जो भी bad debt का amount है या फिर जो भी provision आपने किया है आपका बैंक का, then you have to show that amount in the profit loss account, in the profit loss account under the heading provisions and contingencies. And अभी जान लो, अगर आपका जो भी bad debts है, मतलब आपके bad debts मतलब कौन? आपके ऐसे बोरोवर जिन्होंने आपके पास से लोन लिया है और वो अभी उनका लोन मतलब डिस्पोज नहीं कर, मतलब आपको रिपे नहीं कर सकते, तो जितना भी अमाउंट का वो रिपे नहीं कर सकते, वो आपका एडवांस वो बैड हो गया. मतलब अगर आपके 10 लाख रुपए के टोटल एडवांस है और आपका बैड डेट मान लो कि 1 लाख रुपए के आपको लोन आगे जाके नहीं मिलने वाले, तो आप बैलेंस शीट में आप कितना एडवांस दिखाओगे? जनरली 9 लाख का ही दिखाओगे. तो इसका मतलब क्या है, आपको एडवांसेस में से ये प्रोविजन का अमाउंट या फिर बैड डेट का अमाउंट माइनस करना है. In the balance sheet. Now, provision for taxation. See, provision for taxation is charged to profit loss account under the heading provisions and contingencies. Under the heading provisions and contingencies in the balance sheet, and it is shown under the heading other liabilities and provisions on the liability side. And provision for taxation, taxation is to be made after making provision for doubtful debts. मतलब पहले doubtful debts का provision करो, उसके बाद provision for taxation का provision करो. Now, provisions and contingency. It is a part of profit loss account. It includes all provisions made for bad and doubtful debts, provision for taxation, provisions for diminution in the value of investments, transfer to contingencies, and other similar items. Now, let's discuss this point: income from non-performing asset. I have just told you what is it, but I'll repeat it one more time. The Reserve Bank of India says that an asset becomes non-performing when it is not generating any income of the bank. Now, in such a case, the bank has been instructed not to charge interest on non-performing asset. In the case of the bank, the most important asset is the advances. If interest is not paid on the advances for 3 months, then it is treated as non-performing asset. Now, any interest charged on to loan account and taken as the income must be cancelled by reverse entry. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको रिवर्स एंट्री करना है. मतलब रिवर्स एंट्री मतलब क्या होता है? देखो, जनरली इंटरेस्ट बैंक का इनकम है, नॉमिनल रूल के हिसाब से जब इनकम हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम नॉमिनल रूल के हिसाब से उसे क्रेडिट इफेक्ट देते हैं, बिकॉज क्रेडिट्स आर ऑल इनकम्स एंड गेन. लेकिन यहाँ पे हमें उस इंटरेस्ट को जो कि नॉन परफॉर्मिंग असेट का है, कि उसको अब हमें इनकम एज इनकम करके ट्रीट नहीं करना है, तो देन वी शुड पास रिवर्स एंट्री. मतलब जो जिसे हम क्रेडिट करते थे हमें उसे अब डेबिट करना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट. I think one more point is left. Now interest on doubtful debts. Similar. Now what is to be done in case of interest on doubtful debts? I told you that we have to pass the reverse entry, but there is one more procedure that we have to follow. As per this,
बैंक गिव्स loans and sometimes some of these loans may be turned as doubtful debts. मतलब अगर borrower पैसे देने में fail हो जाता है then bank treat such advances as a doubtful debts. Interest receivable on these doubtful debts is debited to loan account. चलो लोन अकाउंट को डेबिट करना है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। चलो मान लो कि मैंने आपको 10,000 का कर्जा दिया और आपको वो 5% से दिया है मैंने। चलो मान लो 5% से दिया है और महीने का 500 रुपये होता है, ऐसा मान लो आप। अगर आप 1 महीना हो गया तो अगर मुझे आपसे पैसा लेना है तो मैं आपसे कितना पैसा लूँगा, इन टोटल 10,500 लूँगा। मतलब मेरा मुझे पहले आपसे 10,000 लेने थे, अभी इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट का बढ़ा, यानी कि आप मुझे आपसे अभी 10,500 लेना है। मतलब फॉर मी यू आर माई एसेट और मेरा एसेट का बैलेंस बढ़ा है। मेरा एसेट का बैलेंस क्यों बढ़ा है? बिकॉज़ ऑफ रियल रूल। व्हाट रियल रूल सेज दैट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बट एट द सेम टाइम मुझे इंटरेस्ट आपसे वो मिला है क्या? नहीं मिला है। यू आर माई डाउटफुल डेट्स एज ऑफ नाउ, यू आर माई डाउटफुल डेट्स, यू आर माई नॉन परफॉर्मिंग असेट। मुझे आपसे अभी तक इंटरेस्ट नहीं मिला है। एज आई हैव नॉट रिसीव्ड दैट इंटरेस्ट, आई कैन नॉट ट्रीट सच इंटरेस्ट एज माई इनकम। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? आई मस्ट क्रेडिट दैट अमाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मुझे मैं इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट as the interest may or may not be received, and the interest on doubtful debt is credited to separate account, that is known as interest suspense account. मतलब सिचुएशन में एंट्री क्या करूंगा? मैं करूंगा एडवांस अकाउंट डेबिट, मतलब मेरा लोन अकाउंट मैंने जो आपको दिया है, मेरा एडवांस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एंड हियर आई हैव नॉट क्रेडिटेड द ओरिजिनल इंटरेस्ट डिस्काउंट अकाउंट, मैंने वो नहीं क्रेडिट किया बिकॉज द इंटरेस्ट मे और मे नॉट बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर. Now, if in future, if interest on the doubtful debt is received afterwards, then interest suspense account is debited and interest account is credited. मतलब ये एडजस्टमेंट अकाउंट है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कौन सा? एडजस्टमेंट अकाउंट है। हाँ, इट कम्स इन पिक्चर व्हेन asset turns from performing to non performing, from non performing to performing. उसके बीच में बैलेंस रखने का काम कौन सा अकाउंट करेगा? विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट. मैं आफ्टर रिसीविंग द इंटरेस्ट, then only my interest account is credited due to cash concept, because we have to recognize the interest as income in case of non-performing asset when it is actually received in cash. The balance of interest expense account represents irrecoverable interest and it is transferred to loan account. Okay, now this part is over. Now in the next video I'll discuss with you how to prepare the financial statements in a vertical format as per the Banking Regulation Act 1914. Thank you.